In the last class, we had discussed these aspects. Stokes shift was one of them that we discussed. So clearly, ये तो क्लियर है कि एब्जॉर्प्शन पीक और एमिशन पीक के बीच में जो डिफरेंस होगा लैम्डा वेवलेंथ का लैम्डा मैक्स का उसको हम we know it as Stokes shift in the honor of George Gabriel Stokes. Okay. तो कभी भी स्ट्रोक में कई बार स्पेलिंग में लोग आर लगा देते हैं, स्ट्रोक्स नहीं है ये वर्ड है, ये नाम है जो किसी साइंटिस्ट का है उससे लिया गया है। तो कभी भी वो गलती नहीं कीजिएगा, whenever you are writing it is Stokes. Stokes is a name. यहाँ पे भी मेरे एक गलती हो गई है, यहाँ पे एस है, so George Gabriel Stokes, and it is the difference between the two lambda max positions in the fluorescence and the absorption. Okay, then we also discuss this mirror image rule, which is usually found in organic fluorophores, and typically whenever you have S0 to S1 excitation this will happen. But if you have so, and I also told you that these are the characteristics of excited electronic state, vibrational level spacing of the excited electrons, and these are for the lower state, ground state. Further, yeah, relaxation about the solvent and the solute solvent interaction, how it can change the S1 state itself. S1 ट्रांजिशन जो S1 का एनर्जी लेवल है वो कैसे, और S0 का भी, दोनों का अफेक्टेड होगा। कैसे अफेक्टेड होगा डिपेंड करता है whether what kind of molecule you have in the solvent and the solute. So if the fluorophore is polar, then if it is a polar solute, polar fluorophore अगर उसको हम डाल देते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देयर इज नो इंटरेक्शन, मतलब एज सच एंड अनअफेक्टेड है। लेकिन अगर सॉल्वेंट पोलर है तब ऐसा कुछ ओरिएंटेशन चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाते ही इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी चेंज होगी, प्रोफाइल there will be change in the polarity of the solute molecule, that is and so this energy level will slightly change. So when the orientation so because of the change in polarity of the orbital nature, what will happen, there will be reorientation of the solvent molecules. देखिए ये orientation बदल गया है, जो green वाला part facing the solute था, now the green part is on the opposite side, so polarity change. So this kind of thing can happen, but this takes certain time, about 10 to the power minus 10 seconds. एब्जॉर्प्शन इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, फेम्टोसेकेंड लेवल में होता है, और यहाँ सो इट डजंट गेट इनिशियली जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के पास टाइम ही नहीं है कि इतनी जल्दी अरेंज कर ले, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को रीअरेंज करता है, और जैसे ही रीअरेंज करता है उसका एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगी। एक्साइटेड स्टेट का मतलब S1 स्टेट में जो था मॉलिक्यूल उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। Similarly, and in this particular orientation, the S0 state is now destabilized. This S1 is stabilized by solvent. S0 is destabilized. इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। जो ओरिएंटेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा था, क्योंकि मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अभी इस स्टेट में है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल के चारों तरफ सेंट्रल जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं उसके चारों ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन ही है, तुरंत इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर यहाँ पे आ गया, तो इस केस में ओरिएंटेशन थोड़ी देर के लिए पहले ऐसे ही रहेगा, तो जो एमिशन हो रहा है वो आपका ये वाला हो रहा है, और फिर धीरे धीरे समय मिलेगा तो रिलैक्स बैक करेगा, इस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन, जस्ट लेट मी रब इट ऑफ, समझ में आ रहा है ये डायग्राम। एब्जॉर्प्शन हुआ फोटोन, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हो रहा है, एब्जॉर्प्शन इज अ फास्ट प्रोसेस, ये 10 to the power minus 15 seconds,
सेकेंड ऑर्डर का होगा। ये जो होगा रिलैक्सेशन होने में टाइम लगेगा, इट विल बी अराउंड 10⁻−10 सेकेंड्स। ठीक है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम, 5। ओके, और फिर तो ये आप देख रहे हो व्हाट हैज चेंज्ड इन ये 10⁻−10 सेकेंड्स हैज चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंडिंग ऑन चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ द फ्लोरोफोर। ठीक है, नए ऑर्बिटल में नए तरह से उसको रीअरेंज होना पड़ेगा, तब वो चार्ज का जो बैलेंस, मतलब आयन डाइपोल इंटरेक्शन और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इट इज ऑलवेज डायरेक्शनल। सो अगर डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, then there should be a change in the solvent orientation around solvent molecules। ठीक है, so तो उसके after the absorption has happened, it gets some time to reorient, it happens, and then it will everything that you have about that s naught to s sorry s1 में जो lower most vibrational level होगा they will उसमें आ जाएगा, it will gradually relax, VR will happen, vibrational relaxation, and finally it will come here, and so that picture is not shown here, वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। So this is the case, solvent is non-polar। अगर solvent non-polar होगा उस केस में this S1 state and S1 alone, when you are visualizing this is S1 with solvent, कोई फर्क नहीं पड़ता, there is no effect, यही दिखाने के लिए दो डायग्राम है। S1 state remains unaffected if the fluorophore is polar but the solvent is non-polar। In that case कुछ भी नहीं बदला इसमें, ठीक है, no stabilization of the S1 state। but in contrast if this is polar, ठीक है, यहाँ से देखिए ग्राउंड स्टेट ऑफ द सॉल्यूट, सबसे ये वाला पैनल यहाँ से देखिए, ग्राउंड स्टेट ऑफ द फ्लोरोफोर पोलर, एंड उसके अकॉर्डिंग डाइपोल एडजस्टेड है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, सॉल्वेंट इज ऑल्सो पोलर नाउ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुआ, S1 स्टेट में पहुंच गया ये सेंट्रल वाला मॉलिक्यूल, एंड ड्यू टू दैट देयर इज चेंज इन द डाइपोल, डाइपोल का ओरिएंटेशन बदल गया। तो अब इस डाइपोल के हिसाब से सॉल्वेंट का डाइपोल भी ओरिएंट हो जाना चाहिए, तब लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन होगा। बट इट हैज, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजिशन इज सच दैट इट डजंट गेट एनफ टाइम, जब तक एब्जॉर्प्शन हो रहा है तब तक नहीं कर पाए। एब्जॉर्प्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया है S1 स्टेट में, नाउ इट हैज एनफ टाइम द S1, दिस इज, मैं बार बार कह रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये भी S1 ही है, ये कोई इंटर सिस्टम क्रॉसिंग नहीं है। S1 स्टेट इज बीइंग स्टेबलाइज्ड बाय चेंज इन ओरिएंटेशन। अब ये जो सॉल्वेंट ओरिएंटेशन हैज चेंज्ड, ठीक है, टू अलाइन विद द डाइपोल इन द, जो सॉल्यूट में जो सॉल्यूट फ्लोरोफोर है उसका डाइपोल जो रीओरिएंट हुआ है इन द एक्साइटेड स्टेट, उसके साथ साथ ये अपने आप को ओरिएंट कर रहा है, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, so you have S1 state which is lying here। So net effect is that now if the fluorescence happens, there will be, the energy of transition will be lower। और यही चीज हमने लास्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल जो दे के बताया था, तो बाकी सब लिखा हुआ है, वो पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। एग्जाम्पल दिया था हमने ट्रिप्टोफैन का। ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है जो कि इट इज इन एवरी प्रोटीन, सभी प्रोटीन में एक immediate part है। It has indole moiety which is heterocyclic indole moiety in the tryptophan, this one you can identify this one। So this is embedded in the hydrophobic pocket of a quaternary structure of the protein। ठीक है, अब जैसे जैसे इफ नाउ अगर वो प्रोटीन को डीनेचर करते हैं, मतलब हीट करें, वो जो फोल्डेड है फोल्डिंग खुल जाएगा, सारा एक्सपोज हो जाएगा, ये जो रिंग है ट्रिप्टोफैन में, इंडोल रिंग, दिस विल बी एक्सपोज टू द एक्वस
surrounding medium, and then you will see a change in the fluorescence profile. Okay, and that's what is observed. जो हमने देखा कि एनर्जी कम होना चाहिए, तो एनर्जी लॉन्गर, दैट मीन्स इट विल शिफ्ट टू अ लॉन्गर वेवलेंथ. 330 से 365 नैनोमीटर पे चला जाता है इन एक्वस सिस्टम. वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट, तो पोलैरिटी का बहुत इफेक्ट होता है उसमें. और इस तरह की चीज़ें काफ़ी स्ट्रांगली ऑब्जर्व. दिस इज 330 टू 330 365 लगभग यहाँ पे, मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे. सो ये जो शिफ्ट होता है इस तरह का. डीनेचर होने के बाद जब प्रोटीन खुल गया यहाँ पे जैसे है, ये प्रोटीन है, ये ट्रिप्टोफैन मोइटी है, जिसको कि ये धीरे धीरे फोल्डेड पोजीशन से अनफोल्डेड इस तरह से खुल गया पूरा. तो अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन बढ़ गया. हाँ, और वही जो इंडोर रिंग है, दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर फ्लोरेसेंस. एक्चुअली जो फ्लोरेसेंस है आपका उसी से आ रहा था. सो डाइपोल ओवरऑल, सो यहाँ पे आप देखेंगे. सो जो रेजिड्यू है ट्रिप्टोफैन रेजिड्यू, विच इज सो एनवायरनमेंट ऑफ ट्रिप्टोफैन रेजिड्यू, जो ये वाला पार्ट था, इसके आसपास जो स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक पॉकेट था, तो कोई मतलब इट वाज इन अ नॉन पोलर एनवायरनमेंट. नाउ सडनली इट इज एक्सपोज्ड टू अ पोलर एनवायरनमेंट जब वो पानी से कांटेक्ट में आएगा. ठीक है, व्हेन इट इज इन द सराउंडिंग इज द एक्वा सॉल्यूशन. ठीक है. सो नॉन, दिस इज द ट्रांजिशन दैट हैपेंड फ्रॉम इमीडिएट विसिनिटी में नॉन पोलर टू हाईली पोलर. इंडोर रिंग इज प्लेस्ड, मतलब इंडोर रिंग के सामने ऐसी सिचुएशन आती है. एंड दिस चेंजेस दिस व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस, द टू पिक्चर्स इन प्रीवियस स्लाइड्स, उससे कोरिलेट करके ये वाला जब हाइड्रोफोबिक पॉकेट में है तो कोई चेंज नहीं, S1 state remains same, there is no minimal interaction with the solvent or no interaction anyway. And when it is opened up, it has having strong interaction, and in that case the orientation in the excited state, the orientation in the ground state will be different, going by simple consideration of the dipoles. And it is the consideration of time scale which gives you this kind of diagram. So it is the S1 which is stabilized by the solvent because of the orientation, reorientation that takes place around the. ठीक है. So so that is 365 nanometers. So solvent polarity will be affected in this manner, and that was one thing aspect that I wanted to discuss. Now there is something called fluorescence resonance energy transfer. It is molecule. There is molecule 1, molecule 2. Both are fluorescent. This is also fluorescent, and this one is also fluorescent. So it is an interaction between two fluorescent molecules. ये जो स्पेसिफिक चीज है, एनर्जी ट्रांसफर होता है दो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल के बीच में. ऐसा होता है, कब होगा, किस कंडीशन में होगा, दैट इज. So if the two molecules which are fluorescent approach each other very closely, within say 100 angstrom, uh, 100 angstrom or less. So this is if the distance between the two fluorophores is sufficiently less, and also there is sufficient overlap of the fluorescence spectrum of the molecule 1 with the absorption of the molecule 2. Second molecule का absorption spectra पहले वाले मॉलिक्यूल के फ्लोरेसेंस के साथ ओवरलैप कर रहा है. फ्लोरेसेंस इज एमिशन ऑफ लाइट, दूसरे का एब्जॉर्प्शन से ओवरलैप कर रहा है. तो अंडर दीज कंडीशंस एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस फ्रॉम मॉलिक्यूल 1 to 2. इसको हम डोनर कहेंगे. दिस मॉलिक्यूल 1 इज कॉल्ड डोनर, एंड दिस वन विल बी कॉल्ड एक्सेप्टर. ये जो मॉलिक्यूल 2 है, ठीक है.
पहली बार जब हम देखते हैं तो it appears that molecule 1 is emitting light and the molecule 2 is absorbing, लेकिन ऐसा नहीं होता है. It is a through space interaction in which मतलब there is मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो डाइपोल डाइपोल इसका ट्रांजिशन डाइपोल इसका ट्रांजिशन डाइपोल इंटरेक्ट कर रहा है और थ्रू स्पेस इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है एनर्जी ट्रांसफर होता है. So that is the overall resultant is that the fluorescence of the acceptor molecule 2 is enhanced. Because of this kind of energy transfer, the absorption fluorescence intensity बढ़ जाएगा. जब मॉलिक्यूल 2 होगा इसका कम दिखेगा इसका दिखेगा ही नहीं या बहुत कम होगा और दूसरे वाले का बढ़ जाएगा. इसका एक क्लासिक एग्जांपल है बायोलॉजिकल सिस्टम में टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. They form this kind of pair. In biological system there is example of this is tyrosine amino acid and tryptophan. If you look at पता नहीं मैंने स्लाइड में डाला है कि नहीं बट हाँ मुझे अभी ध्यान में डाल के दिखा पाता तो अच्छा रहता. So tyrosine and tryptophan, if you look at the absorption and emission profile, absorption and fluorescence spectra, exactly this kind of situation is there. That fluorescence of tyrosine is overlapping with the absorption band of tryptophan. And in the protein structure, it is quite possible that they are very close to packed in the quaternary structure. And many times you will find that only because tyrosine transfers its energy to the tryptophan, only tryptophan process can be seen. This happens. ठीक है. So emission of one overlaps with absorption of another if there is significant overlap, if they are within a certain distance very close to other. ये दो essential condition है. तो this Foster's resonance energy transfer, actually इसको fluorescence resonance energy transfer कहते हैं, but better word is by the name of the scientist who discovered it, इसको Foster's, ये दो बुंदा वाला ओ लिखना, ये जैसे फॉस्टर्स एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं. ठीक है. सो जो जर्मन होता है ना सिमॉस बार में जो उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है, ओ की तरह नहीं लिखना. जैसे मोबिल फर्नीचर किया म्यो उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं. सो स्लाइट डिफरेंस इज देयर व्हेन यू पुट टू डॉट्स ऑन द जर्मन प्रोनाउंसिएशन में. तो फॉस्टर्स का भी उस तरह से. So normally, so it is a through space interaction. It is a non-radiative transfer. So it is, that's what I am trying to say. कि ऐसा नहीं है कि इसने रेडिएट किया और तब जाके वो एब्जॉर्ब हुआ दूसरे मॉलिक्यूल के बाद. It is not like that. That there is energy transfer is absolutely non-radiative in nature. It is the interaction of two transition dipoles. Dipole in molecule 1, dipole in molecule 2, and they interact just like you have two charges interacting. So dipole are space mirroring through space interaction. It is a similar kind of interaction which through which the energy transfer takes place. So this is very useful in designing of many kind of sensors, biological sensor. If you probe DNA और सब hybridization probe करने के लिए भी use होता है. So good to study protein-protein interaction. So there are a lot of applications of this fluorescence resonance energy transfer. और इसी का एक एक्सटेंशन है जिसको जैसे फ्रेट है ना, एक और टर्म आता है जो कि so this is fret. If this similar thing happens in biological system, it is known as Brett. मतलब Brett मतलब this is bioluminescence. Similar to Brett. So जो Brett का एग्जांपल, हाँ लास्ट बैच में हाँ बिहार का लिखा है ना Brett.
लिटरेचर सर्वे किया था, ब्रेथ एंड क्वांटम डॉट्स. So we have earlier in the branch we had some detailed discussion. Bread, so bread में अभी डिटेल में नहीं जा रहा है वो एक्चुअली. सो जस्ट लाइक इन जुगनू में जो जैसे आप देखते हैं वो सब एग्जांपल हो सकता है. ल्यूसिफरेज एंजाइम से एनर्जी ट्रांसफर किसी एक दूसरे फ्लोरोफोर में होता है. तो सो ये सब जस्ट फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज है, ये आपके वैसे ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो ये जो डीएनए में दो चेन होता है ना, तो वो दोनों हाइब्रिडाइज का मतलब वो क्रॉसिंग करके जो हेलिक्स स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स बन गया है कि नहीं बना है, वो अगर हमें समझना है तो इस तरह से लोग करते हैं. या ओपन हुआ है कि नहीं, वी वांट टू ओपन दैट डबल हेलिक्स. इफ यू वांट टू डैमेज डेलिबरेटली हम डीएनए को खोलना चाहते हैं क्रोमोसोम उसमें न्यूक्लियस में जाके, तो ये सब करना पड़ता है. तो इसको टैगिंग करते हैं. तो जैसे these are two fluorescence molecules CY3 CY5. This is 540 excitation, 590 emission. This is 540 excitation. So there is overlap. You can see emission of 540. No. What is, if they are sufficiently close? एक मिनट. Okay, so blue fluorescent. So this is the example of thread between blue fluorescent protein, green fluorescent GFP and BFP, and if they are brought in close proximity, then green fluorescent color. Okay, leave this part. This picture, something is missing. 685. Okay, so another thing that is मतलब दो फ्लोरेसेंट कंपेयर उसकी जो एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंस है उसको आप कैसे क्वांटिफाई करें. हाउ डू यू क्वांटिफाई द फ्लोरेसेंस एफिशिएंसी. So that is the term photoluminescence quantum yield is coming from, and that's where you have to know this term. So you, if suppose if you are able to count the number of photons emitted and number of photons emitted, मतलब आपने कितना फोटॉन लिया initially excite करने के लिए and finally कितना output as emitted photon मिल रहा है. So that ratio is your quantum yield of fluorescence. Fluorescence quantum yield or photoluminescence quantum yield, you can say. So if you give say 100 photon is given, you are expecting that 100 के 100 हमें वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है. There is always some non-radiative transfer energy transfer process which always happen in the surroundings. And so you have like fluorescein molecule है, fluorescein that has 95%. So if there is a molecule called fluorescein, it has around 95% PLQI. Photoluminescent quantum yield is around 95%. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको 100 फोटॉन देते हैं एक्साइट करने के लिए तो 95 एमिट करता है. Of course वो shorter excitation wavelength will be shorter and emitted wavelength will be longer. ठीक है, लेकिन number of photons will be like this. So ऐसे केस में हम कहते हैं कि this is having a very high photoluminescence quantum yield. ये जो है 95% बहुत हाई है. यूजुअली 50% के ऊपर रहता है तब भी हम कहते हैं कि गुड फ्लोरेसेंस दैट यू आर गेटिंग. ठीक है. सो इन comparative measurements with standard. So usually it is done by comparison. There are certain molecules which are taken as quantum standards. प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि जो क्वांटम स्टैंडर्ड्स हैं मतलब उनका पहले से नोन होता है.
दिस इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू डू। अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड नंबर काउंट करना है तो आप इमेजिन करके देखिए लेबोरेटरी में आप कैसे करेंगे, क्योंकि जो सैंपल लाइट सोर्स ऐसे पड़ा सैंपल एमिट करेगा तो ये चारों इट विल एमिट इन ऑल डायरेक्शन। आपका डिटेक्टर इधर एक तरफ ही रखा होगा तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। जो नॉर्मल फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं उसमें आप 90 मीटर इधर से एक्साइट करेंगे, यहाँ पे सैंपल है और इधर डिटेक्टर 90 डिग्री सोर्स सैंपल डिटेक्टर लाइक दैट। सो व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में वो काफी डिफिकल्ट है। सो नॉर्मली द मेथड दैट इज डिप्लॉयड इज दैट इफ यू हैव सम स्टैंडर्ड sufficiently stable fluorophore which under certain conditions how if it dissolved in a suitable solvent has it is fluorescent and that is known accurately, okay, then you can use it for comparison with others, दूसरे किसी का कंपेयर कर सकते हो और तब आप कैलकुलेट कर पाते हैं। सो जो स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड कंपाउंड जो लिया जाता है दैट इज हाउ डू वी टेक दैट समथिंग कैन बी ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड, दैट इज यू चूज समथिंग एज सो वट एवर मॉलिक्यूल जो टेस्ट फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल है जिसका कि आपको डिटरमिन करना है द स्टैंडर्ड शुड बी चोजन इन सच अ वे दैट बोथ हैव सेम excitation wavelength and almost the same absorbance at that particular point, लगभग आसपास होना चाहिए, नॉट सेम सिमिलर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, एक्साइटेशन तो एक ही वेवलेंथ पे करना है, एग्जैक्टली द सेम वेवलेंथ यू चूज एंड देन एक्साइट एट द सेम वेवलेंथ। So and then you try to solve so refractive index, so same solvent if you prefer, so because the refractive index will apply come into picture, so जहाँ तक हो सके सेम सॉल्वेंट को लीजिए। So this is the formula that so this is the stand for the standard if it is known, this is standard quantum yield of standard fluorophore, it's so known photoluminescence quantum yield, it has known photoluminescence quantum yield. So you are comparing your this is your test sample, test sample unknown, so इसका हमें नहीं पता है, इसका डिटरमिन करना है। So what we will do, we will take absorbance, so you can see this is the comparison of absorbance, so जिसका डिटरमिन करना है so, थोड़ा सा इसको, so usually if your solvent is water, if the solvent is same, this is the refractive index, refractive index same if solvent is same, सो ये आपको लगभग नहीं करना पड़ता, ये वाला पार्ट जो लास्ट वाला है वो फॉर्मूला निकल जाता है, क्योंकि अगर आप जैसे एक्वस में कर रहे हैं, एक्वस मीडियम में आपके सॉल्वेंट के लिए भी यूज हो रहा है, सॉरी आपके स्टैंडर्ड्स और सैंपल दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, देन दिस टर्म इज गॉन, इन केस इट इज डिफरेंट देन यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। सो बचता है क्या, दिस इज व्हाट आई इज इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस, this is fluorescence intensity of the unknown, fluorescence intensity of unknown, this is fluorescence intensity of the standard,
स्टैंडर्ड जो है उसका. And in the same way, what is this? This is the absorbance of unknown, and this is absorbance of known. मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं I बाई ए. ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. जो यहाँ पे बेसिकली हमने किया है, fluorescence intensity of unknown emitted light by the sample, absorbance of the sample. ठीक है ना. तो कितना एब्जॉर्ब किया, कितना एमिट किया, जिसका नून है उसके वाले से, क्योंकि ये यहाँ पे कंपेयर है. एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्टैंडर्ड, एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड. कंपैरिजन में एक क्या होगा, नून है उसी वेवलेंथ पे एक्साइट कर रहे हैं दोनों को, वेवलेंथ ऑफ एक्साइटेशन विल बी सेम. ठीक है. सो दिस लैम्डा कांस्टेंट, इसको हम एब्जॉर्प्शन के लिए जो यूज करें, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज एक कांस्टेंट वेवलेंथ पे दोनों को एक्साइट करेंगे. ठीक है. तो एब्जॉर्बेंस वैल्यू को आपने कंपेयर कर लिया, तो आपको यू हैव आइडिया. सो से 0.5 है एब्जॉर्बेंस वैल्यू, सो कंपेयर, किसी का सैंपल का 0.4 होगा, ऐसा कुछ होगा, एंड देन कंपेयर द इंटेंसिटी. ठीक है. तो इससे आपको, सो इन दिस मैनर यू कैन कैलकुलेट द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी. Last time in project, Niharika has done that. First calculation of photoluminescence quantum yield. लेकिन वो, हाँ, रिपोर्ट में नहीं गया है, लेकिन बाद में आया था, बाद में करके she has done that. हाँ. हाँ, तो इस तरह से by using this kind of thing you can actually calculate in your sample. अच्छा. So sometimes if we have to cross check कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं प्रैक्टिकल, we take two standards, quantum standards, और एक को सैंपल मान के दूसरे को स्टैंडर्ड मान के आप उसको कीजिए. उसका जो रिपोर्टेड वैल्यू है वो आ जाना चाहिए. अगर वो आ गया तो आप सही कर बस. ठीक है. वी हैव वेरीफाइड, हम आपस में वेरीफाई करते हैं, किया भी है. ठीक है. लेकिन आप, हम लोगों ने जो अभी स्पेक्ट्रोमीटर लिया है उसमें आपको एक एडिशनल चीज है. ये कॉमन तरीका है, ये ज्यादातर ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम पीपल यूज दिस टेक्निक फॉर डिटरमिनेशन. बट अगर आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है और आपको डिटरमिन करना, कुछ ऐसा कंपाउंड स्प्रिंग कि आपको मैचिंग स्टैंडर्ड मिल ही नहीं रहा है, आपको एब्सोल्यूट क्वांटम डिटरमिन करना है. एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना फोटोन एब्जॉर्ब, कितना फोटोन एब्जॉर्ब कितना एमिट करें. तब क्या करेंगे, तब एक और इंस्ट्रूमेंट में हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटीग्रेटिंग स्फीयर. वो वी हैव procured, that is something that we have procured, which nobody in and around हमारे आसपास कहीं इंटीग्रेटिंग स्फीयर करें. मतलब वो स्फेरिकल होगा, उसके अंदर सैंपल डालना है, एक्साइटिंग लाइट का है, और उसके बाद सैंपल, जैसे फ्लोरेसेंस तो होगा, दैट इज एमिशन ऑफ लाइट, वो तो किसी भी डायरेक्शन में होगा, जैसे मैंने कहा. सो बिकॉज इट इज पुट इनसाइड द स्फीयर व्हिच इज इंटरनली रिफ्लेक्टिव. ठीक है. तो जो भी एमिटेड फोटोन होगा कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सब इंटरनली टकरा के रिफ्लेक्ट होकर इट इज सेंट टू द डिटेक्टर. तो एक भी फोटोन बचा नहीं, इधर लॉस नहीं होगा. इन दैट केस वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट क्वांटम. So that is the thing, वो इसमें स्लाइड में नहीं है. इंटीग्रेटेड स्फीयर उसी में अटैच है, जहाँ सैंपल लगाते हैं वहाँ पे इंटीग्रेटेड स्फीयर अगर लगाते हैं, then it is possible to calculate the absolute quantity. But this is the most common method worldwide. टेक्स्ट बुक में भी आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, किसी भी बुक में सर्च करेंगे हाउ टू डिटरमाइन फोटोसिंथेसिस
That's what they will say, that you take a standard, this is what. So so that is what I'm integrating. स्फीयर वाली टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ वो नई चीज है, मतलब ऐसा पहले। और जो मैंने उस दिन बताया था, लास्ट लास्ट क्लास में मैंने कहा, पूछा था आपसे कि हाँ, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस practically in laboratory sense. So this is so switching on the source and observing the thing. उस तरह से आप देखें। So यही चीज मैंने आपको बनाया था। If the source is removed, light source is switched off, then you don't see any glow, any emission of light from this. As soon as this, so जब तक आपने UV लैम्प में रखा है, तब तक आपको ग्लो दिख रहा है फ्लोरेसेंट बल्ब की तरह। जैसे ही आप UV लैम्प स्विच ऑफ करेंगे, you won't see any glow. That is fluorescence. Okay, phosphorescence में it will continue even if you switch off the source, UV lamp को off भी कर दिया आपने, it continues for longer period spontaneously, उसमें emission जो है from few fraction of seconds to several minutes। ठीक है ना, कि ये समझ रहे ना, नैनो सेकेंड टाइम स्केल बहुत कम होता है। सो एक्चुअल जो डिके प्रोफाइल है, इफ यू एनालाइज दिस थिंग, it will appear as given in this picture. Intensity of light versus time has been plotted. So this is the time frame in which the light source is on, और उसके बाद इस पॉइंट के बाद यहाँ पे आपने लाइट सोर्स बंद कर दिया। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, जब तक लाइट सोर्स जल रहा था, जब तक लैम्प जल रहा था, तब तक वो एक कंटिन्यूअस एमिशन, एक सर्टेन इंटेंसिटी आपको मिल रहा था। जब तक सोर्स ऑन है, आउटपुट आपको सेम मिल रहा था, है ना। सो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड लाइट वाज सेम। एज सून एज इट इज स्विच्ड ऑफ, स्विच ऑफ किया, अब आपका इंटेंसिटी घटना शुरू हो गया, एंड इट इज, दिस इज एक्सपोनेंशियल डिके, दिस इज एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ द एमिटेड फोटॉन, द लाइट ऑफ द। लेकिन ये इतना छोटे स्केल पे, नैनो सेकंड 10⁻⁹, तो प्रैक्टिकली आपको स्विच ऑफ करने में तो उससे ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको तो दिखेगा, जैसे ही स्विच ऑफ किया, आपको कब का वो बंद हो चुका है, टाइमर सेकंड खत्म हो के ऐसा हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज योर एंड फॉस्फोरेसेंस में अभी देखिए ये लेवल था इंटेंसिटी का, इट कंटिन्यूज टू उसी के आसपास, जब तक ये खत्म हो गया, ये अभी चले जा रहा है, लाइट कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ लाइट यू आर सीइंग, है ना। सर स्विच अगर ऑन ही रखे तो बिल्कुल क्या फ्लोरेसेंस के लिए स्विच ऑन ही रखे, हाँ सर देखना, आप ऑन रखेंगे तब आपको ग्लो दिख रहा है कंटिन्यूअस। उसका भी एक फोटो ब्लीचिंग एक कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आप ऑन छोड़ दिए, यूवी लैम्प में डाल के छोड़ देंगे, फ्लोरेसेंट बल्ब के आधे घंटे के बाद देखिएगा कि वो डिम होना शुरू होगा और धीरे 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 खत्म, इसको फोटो ब्लीचिंग कहते हैं। तो क्योंकि तब वो एक्साइटेड स्टेट रिएक्शन या कुछ कुछ होते होते वो पूरा खत्म हो जाता है, उसका जो एफिशिएंसी है ना वो खत्म हो जाता है, दैट इज फोटो ब्लीचिंग। वो लेकिन जस्ट so phosphorescence is a much slower process. It is observable even if you switch off, क्योंकि आपको 1 सेकंड लगेगा, वो 10 सेकंड तक भी कई बार जैसा कि कहा गया कि कई इन सब एक्सेप्शनल केसेस इवन टू फ्यू मिनट्स तक चला जाता है, आपको ग्लो दिखता रहता है ना। सो वाइल इट इज स्टिल at this point, if this is the time, at this point no no emission here, if something is phosphorescent, emission is still significant, काफी हाई सिग्निफिकेंट, मतलब कंपेयर टू दिस, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ऑफ कर दिया, इतने टाइम के बाद भी इसमें अभी ग्लो दिखेगा एमिशन, दैट इज फास्फोरेसेंस में। यही था, पिक्टोरियली आपको बताना हो, ग्राफ के थ्रू बताना हो तो ऐसे बताते हैं। सो व्हाट इज फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम, एवरेज डिके टाइम, वो जो था डिके प्रोफाइल का, उसमें अगर डिके टाइम आप निकालते हैं कितने पे, तो सो दैट इज डिफाइंड एज 1/e टाइम्स डिके जो होता है, दैट उस पॉइंट को लोकेट करना है।
So this is the way to define it. It's a measure of the time fluorescence in excited state before returning to the ground state by it. So you have a certain number of molecules. Suppose 100 फोटोन थे तो कितने अब एक एक करके डी एक्साइट होंगे एंड यू विल हैव ये जो प्रोफाइल है सो ये लैम्प ऑफ blue line indicates that at this point the lamp is switched off and the decay starts, and this point where you have it is the 1 by e times I naught, and this is the 1 by e into I naught. So 1 by जब इतना टाइम्स डिके हो गया है that is your lifetime. So which comes out to be, if calculated, 36.8% of the original population. So this is how you need to understand. So you have a fluorophore population. कई सारे molecules जब आप लेंगे तो when you have taking a sample, within the sample you will have a certain population of fluorophores which will be excited. Now out of those excited molecules, when the lamp is switched off, there will be decay. So how much time it takes to reach to the 36.8% of the original population? एक्साइटेड जितने भी हैं जो एमिट कर रहे थे उसमें से अगर 100 मॉलिक्यूल एक्साइट हुए तो 100 का 100 से 36.8 तक का पहुंचेगा, धीरे-धीरे सब डिके करना शुरू होगा and finally will reach this point. So if you calculate this I naught initial intensity and t by, so this is so this is how we calculate the population excited state at time t and at zero time, initial and after certain time t. Alpha is the pre-exponential factor and tau is the fluorescent lifetime. Fluorescence lifetime. So when t is equal to tau, e to the power minus 1 हो जाएगा. So 1 by e. 1 by e वाला फैक्टर कब आएगा? जब when t, if t is equal to tau, and in that case you will be having 1 by e times the initial intensity. So same thing in a different way. So this is a simple decay profile. इससे भी थोड़ा complicated decay profile होता है, but we are not going to most of the time. So this is the simplest way we can show how the fluorescence decay happens. Single exponential decay. There could be examples where you will have multi-exponential decay in a very complex process, but so that's all we have in this fluorescence.